Welcome to the Voice and Visuals of Amber, episode number 27. But before we begin the lesson, बस एक गुजारिश है. Please, whenever, if you have to step out of your house, then wear a double mask, 2 masks, and please carry a hand sanitizer with you, because if you touch any surface outside, then immediately just sprinkle 1 or 2 drops on your palms and then rub them vigorously. So please take all precautions, and I'm sure together India will be able to fight this second wave. Yes, we have lost so many near and dear ones. Everybody seems to have lost somebody or the other. We pay our respect to the souls of all those whom we have lost. Wear a double mask, keep using a hand sanitizer, and maintain social distancing, physical distancing. So I'll just keep these 2 safely over here. And here we begin. So today we continue with the figures of speech or literary or poetic devices. And this is my most favorite figure of speech or poetic device. And I'm sure this will be your favorite figure of speech too. At the request of a few viewers of the Voice and Visuals of Amber, I shall try to be bilingual as far as possible from today. और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने इस प्रयास में द्विभाषी बनने के प्रयास में मैं सफल होऊंगा. आज जो हम अलंकार पढ़ने वाले हैं, the poetic device or the figure of speech that we are going to deal with is, yes, सबसे पहले तो इसका pronunciation, इसका उच्चारण क्या है. I've heard lots of people, alright, referring to it or pronouncing it as hyperbole. ये hyperbole नहीं है. इसका सही उच्चारण है hyperbole. Hyperbole. So this is a hyperbole. And let's begin with a wonderful, popular example of hyperbole. Our Hindi film songs are full of hyperbolic expressions. इस अलंकार को हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार. शुरू किया जाए. ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी. ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी. तो अगर ये रेशमी जुल्फें या ये शरबती आंखें ना रहे तो क्या होगा? लोग मर जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को देख करके जी रहे हैं. जी हां, ये है अतिशयोक्ति का एक उदाहरण. This is an example of a hyperbole or a hyperbolic expression. It's a way of speaking or writing that makes something or someone sound or seem much bigger or much smaller
or much better, or much worse, and so on, than they actually are. तो हम इसे किसी की तारीफ करते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं थोड़ा। तो वो जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो ही अतिशयोक्ति होती है। That is, this exaggerated expressions, the exaggeration is actually a kind of hyperbole. So usually this is for effect, and youngsters, who are in love, definitely take recourse to this particular figure of speech. This is a very popular figure of speech with young boys and girls, or young men and women. So, for effect, to express great emotion, बड़ी जो भावना अंदर में है उसको हम व्यक्त करते हैं, तो हम कभी कभी इस अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। And sometimes we use it for humor. हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ताकि जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है वो हंस सके, मुस्कुरा सके, उसका मनोरंजन हो सके। So very often you'll see writers, humorists using this figure of speech, hyperbole, for creating humor. So we'll see examples of hyperbolic expressions. One from everyday life, and then we'll see a few examples from actual literature. तो रोजाना की जिंदगी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। For example, Chetak. We all know Chetak, the famous horse of Maharana Pratap. Chetak galloped faster than wind. हवा से भी तेज दौड़ता था चेतक. So this is an exaggeration, but it is just to create the effect of how fast Chetak used to gallop or run. Another one. Yes, this is something that I always tell my thousands and thousands of students. They often praise me to the skies. And therefore I say, now come on, you children, you students of mine, you have a wonderful knack to make me appear much bigger than what I was, much greater than what I am, and again, much, much bigger than what I will ever be. So most of my students resort to hyperbole. वो अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लेते हैं और अपने शिक्षक, अपने प्रिय लोगों की तारीफ करते हैं। For example, this is sometimes, what children say. Sir, you are the best principal we have ever had, and the school will ever have. ऐसा नहीं होता है। भविष्य को आप कहाँ जानते हैं? तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लगता है तारीफ सुनने में। Alright, thank you so much. I'm so deeply indebted for your love and respect. But then, ऐसा नहीं होता है ना? The school will never have. No, we don't know. There would be, legendary principles in store for your schools. So this is a hyperbolic expression to show that very strong feeling of love and respect. Or, this of course is a very popular one. I love you, dear, to the moon and back. I love you, dear, to the moon and back. मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं चांद तारे सितारे सब कुछ तोड़ के ला सकता हूँ, बस तुम कह दो एक बार। ये क्या है? ये अतिशयोक्ति अलंकारी है ना? So this is hyperbole.
I love you dear to the moon and back. बड़ा खर्चा हो जाएगा स्पेस प्रोग्राम में, स्पेस ऑडिसी में, चांद तक जाओगे ये बोलते बोलते कि I love you, I love you, I love you, and then you will come back बोलते बोलते I love you, I love you, love you. बाप रे बाप, million dollars खर्च हो जाएंगे. Alright, but you know what it means. And the one who is the adorable, lovable object of this sentence, well, she or he will understand that. I love you dear to the moon and back. Or her skin is smoother and softer than silk. Again, I mean, come on. A person's skin will be a person's skin. Alright? So this is again a hyperbolic expression. So very often, we use similes which are exaggerated in nature. We use metaphors which are exaggerated in nature, and therefore they take the form of hyperbolic expressions. Now let's take a few examples from actual literature. This one is from the immortal classic by William Shakespeare, Macbeth. And Lady Macbeth, after killing, or after, goading and motivating her husband Macbeth to kill the king of Scotland, Duncan, she starts feeling guilty. She feels, and many more murders take place in order to hide the killing of King Duncan. So then she feels guilty, and she becomes a sort of a psychological wreck. वो मनोवैज्ञानिक तरीके से टूट सी जाती है. And then तब Lady Macbeth कहती है, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. ये पूरे के पूरे खाड़ी के देशों से अगर हम इत्र मंगाते हैं और मैं अपने हाथों को साफ करती हूँ, और ये जो डंकन के खून से ये जो मेरे हाथ हैं, मेरी आत्मा जो है वो खून से रंगी हुई है, मेरे हाथ रंगे हुए हैं, मैं उन सारे अरेबिया, सारे खाड़ी के देशों, अरब के देशों से मंगवाए गए इत्र से अगर मैं अपना हाथ धोती हूँ तो भी वो खून की जो बू है मेरे हाथों से नहीं जाए. So all the perfumes of Arabia will not be able to sweeten my little hand. So this is hyperbole. ना तो वो अरेबिया या अरब खाड़ी के देशों से समस्त इत्र को जुटा सकती हैं. She can't collect all the perfumes of Arabia, to try and wash her guilt out. It is not possible. But then it shows her extreme guilt feeling. And she uses hyperbole to express that. And then this one is another very popular one. This is from the short story by H.H. Munro Saki. And it is called Mrs. Packletide's Tiger. Mrs. Packletide was jealous of a friend, well, a socialite friend, Luna Bimberton, because Luna Bimberton had claimed that she had flown in a plane, in an aircraft, piloted by an Algerian pilot or aviator. और फिर लूना जो है चारों तरफ शेखी बघारते चल रही थी कि वो 8 मील उन्होंने तय किया है एक हवाई जहाज पे. तो इस पॉपुलैरिटी को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे कम किया जाए. मिसेस पैकलटाइड वाज वेरी जेलस ऑफ हर अचीवमेंट. तो उन्होंने अरेंज किया कि मैं एक टाइगर मारूंगी, मैं एक बाघ का शिकार करूंगी. और फिर वो जाती हैं 1000 रुपए, उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में वो
गांव के प्रधान को देती हैं कि मेरे लिए एक ऐसा शिकार का की व्यवस्था करें, बंदोबस्त करें कि ना तो मुझे कोई रिस्क हो, कोई खतरा हो, और बड़े आराम से मैं उस बाघ को मार सकूं और फिर मैं उसको दिखा सकूं अपने ड्राइंग रूम में रख करके कि हाँ मैं भी शिकारी हो गई हूं. Alright, I have followed in the footsteps of Nimrod, the hunter. तो 1,000 रुपए, मैडम को भी कोई तकलीफ ना हो, मेम साहब को, बड़े आराम से उन्होंने एक ढूंढ करके. अब आप देखिए अतिशयोक्ति यहीं पे शुरू हो जाती है. The hyperbole begins here. They arrange a very old, a very sick tiger. A sick tiger who just does not have any energy or stamina. तो उसको अरेंज करते हैं ये लोग for Mem Sahab, that is Mrs. Bakaldine, to shoot. And this is how, or almost how, Saki, the great humorist, the satirist, he describes this particular scene. मचान पे बैठी हुई है मेम साहब, मिसेस पैकल्टाइन, और उनकी एक कंपेनियन जो पेड कंपेनियन है, उनकी अटेंडेंट है लुइजा मेबिन, और ये मचान पर बड़े सेफ हैं. वो टाइगर, वो बाघ कितनी भी कोशिश करे वो उस मचान की ऊंचाई को छू नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ा बूढ़ा है, बड़ा ही बीमार सा बाघ है. Just see, it was a very old and ailing tiger. So when he saw a very cheap little goat tied to a tree, the regal animal, the royal animal, decided to have a 10-minute nap to summon his energy and stamina before launching the grand assault. वो बाघ इतना बूढ़ा था, इतना बीमार था कि जब उसने देखा कि एक निस्सहाय सा एक बकरी जो है निस्सहाय सी, वो बंधी हुई है एक पेड़ से और वो उसको खा जाएगा, तो उसने सोचा उसके अंदर इस छोटी सी बकरी को मारने की भी जो ताकत है, जो स्टैमिना की आवश्यकता होती है, वो नहीं थी. तो देखते ही उसने सोचा कि क्यों ना मैं 10 मिनट एक नींद ले लूं. Let me have a short nap so that I can collect, I can summon, I can gather all my energy and all my stamina before launching the grand assault. Look at the hyperbolic expression. Launching the grand assault. वो एक छोटी सी बकरी, निस्सहाय बकरी जो बंधी हुई थी पेड़ से, उसको मारने के लिए भी, भाग भी नहीं सकती थी वो, उसको मारने के लिए भी इस बूढ़े कमजोर बाघ को 10 मिनट की नींद लेने की आवश्यकता हो गई, ताकि वो अपनी सारी जो स्टेमिना है, जो उसके अंदर की शक्ति है, वो बटोर सके. So this hyperbolic expression or this hyperbolic description was to create humor. और जब भी मैंने ये पढ़ाया है इसको, इस स्टोरी को स्टैंडर्ड 10 में सर माइकल्स पटना में, बड़ा मजा आता था पढ़ाने में इसको. So hyperbole, my dear, is my most favorite figure of speech, and I'm sure it will be your favorite figure of speech as well. Hyperbole, not hyperbole. ठीक है? हालांकि हिंदी का वो जो शब्द है, वो जो उच्चारण जो गलत तौर से हम करते हैं, हाइपरबोल, तो एक तरह देखा जाए तो सही है, उच्चारण गलत है, लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है वो सही है. हाइपर होके बोल, हाइपर होके बोल, यानी कि जब आप हाइपर होगे
तो आप बढ़ा चढ़ा करके बोलोगे, अपने गुस्से को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे, है ना? तो हाइपर होके बोल, लेकिन ये जस्ट मजाक है. The real pronunciation is hyperbole. Hyperbole, right? So that is all from the voice and visuals of Amber 27. Stay safe, maintain social distancing, always wear a double mask if you have to step out. Otherwise, avoid stepping out of your houses, and then keep washing your hands, even at home, at regular intervals. God bless. Take care. Namaskar.